Hey folks, are you familiar with Greek mythology? Greek mythology is packed with dramatic, often dysfunctional stories featuring gods who acted more like humans than divine beings. Zeus, Aphrodite, Medusa, Athena, Hercules, etc. were some of the major characters in mythology. This mythology is full of drama, where the father had a betrayed son, two siblings were at war. Our next poem, which is Tithonus, is inspired by two characters in Greek mythology, Tithonus and Eos. In Greek mythology, Tithonus was the lover of Eos, who is the goddess of the dawn. Originally, he was bestowed with immortality by Zeus, king of gods. Whether in poem you will study Aurora or Eos being the one who granted him immortality. This particular poem is a dramatic monologue, and I shall explain later that what is dramatic monologue. So, the central theme of this poem is burden of immortality without eternal youth. Other themes could be the necessity of death, the cruelty of nature, time and isolation, and grief. Apart from being a dramatic monologue, this poem could be said an elegy, written in melancholic blank verse. And before starting this poem, let me tell you that what dramatic monologue is. So, a dramatic monologue is a speech in which one character expresses their thoughts to a silent listener. So, the woods decay and fall. It means that even the nature decays. The nature decays and fall, they wither. वो अपना जीवन जी करके खत्म होते हैं. The vapors weep their burden to the ground. It means that even the mist, or you could say vapor, they also get themselves into ground. They are like burden. यानी कंडेंसेशन के बाद का प्रोसेस वो भी एक तरीके से आकर के अपने आप को एंड करता है. कहाँ पे? ग्राउंड पे. मैन कम्स एंड टिल्स द फील्ड एंड लाइज बीनीथ. इंसान आते हैं और अपने फील्ड को टिल करते हैं, अपने फील्ड के साथ रहते हैं और फिर उसी के नीचे दब जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. एंड आफ्टर मैनी अ समर dies the swan. It means that swan, who is considered to be a very elegant bird, जिसका जीने का जो स्टाइल होता है, जिसका जीने का जो लाइफ होता है वो बहुत ही एलिगेंस के साथ होता है, वो भी आखिरी में मर जाता है. बट मी ओनली क्रूअल इमोर्टैलिटी कंज्यूम्स. लेकिन मुझे, ठीक है, मुझे कौन कंज्यूम कर रही है? मुझे इमोर्टैलिटी कंज्यूम कर रही है. यानी कि टिथनस इयोस से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि मुझे इमोर्टैलिटी क्या कर रही है? इट इज कंज्यूमिंग मी. मी ओनली क्रूअल इमोर्टैलिटी कंज्यूम्स, आई विद स्लोली इन दाइन आर्म्स. यानी कि मैं खत्म होता हूं. मैं कहां पे खत्म हो रहा हूं? मैं तुम्हारे हाथों पे खत्म हो रहा हूं. लेकिन फिर भी मैं खत्म नहीं हो पा रहा हूं, यानी कि मैं मर नहीं पा रहा हूं. Here, at the quiet limit of the world, a white-haired shadow roaming like a dream, the ever-silent spaces of the east. किस जगह पे हूं मैं, कैसा हूं? तो यहां पे उनको बताया गया है white-haired, यानी कि पूरी तरीके से वो बूढ़े हो चुके हैं, बहुत बुरी कंडीशन में है. कौन? टिथनस. white-haired है. क्यों? क्योंकि इयोस ने जब इनको वरदान दिया
बूंद दिया तो उस समय पे ये एक चीज भूल गई। वो क्या था? वो ये था कि इनको इमॉर्टैलिटी तो मिली पर इनको यूथ नहीं मिल पाया। तो ये नॉर्मल इंसान की तरह बूढ़े हो रहे हैं और बूढ़े होते ही चले जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे इयोस कैसी है? इयोस आज भी यंग है। इयोस आज भी यंग है और टिथनस बूढ़े होते चले जा रहे हैं। A white-haired shadow roaming like a dream, the ever-silent spaces of the East. The East, Eos. क्यों? क्योंकि इनको सुबह की देवी कहा जाता है, द गॉडेस ऑफ डॉन कहा जाता है, और सुबह कहाँ होती है? ईस्ट में होती है। तो इसीलिए द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट। मैं कहाँ पे हूं? मैं किस जगह पे घूमता हूं? व्हाइट हेयर्ड सा मैं कहाँ पे घूम रहा हूं? मैं ईस्ट में घूम रहा हूं। फार फोल्डेड मिस्ट्स एंड ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉन। और सुबह के टाइम पे मैं उस जगह पे तुम्हारे लिए डेली क्या करता हूं? सिर्फ तुम्हारे आने का इंतजार करता हूं। तो टिथेनस के पास कई सारे क्वेश्चंस हैं इयोस से पूछने के लिए। उसके पास कई सारे क्वेश्चंस हैं जो वो पूछना चाहता है। किससे पूछना चाहता है? इयोस से पूछना चाहता है। वो उससे बोलना चाहता है कि दैट व्हेन यू हैड गिवन मी दैट बून यू शुड हैव kept in your mind that yes, I also need eternal youth. मुझे भी या I also needed eternal youth, just like you. You were the goddess. Although टिथनस जो थे, इनकी मदर जो थी वो निम्फ थी, शी वॉज अ निम्फ, लेकिन फिर भी है तो वो ह्यूमन ही, तो उनके अंदर ह्यूमन के ट्रेड्स होंगे। और वो ह्यूमन के ट्रेड्स क्या हैं कि अगर कोई इंसान एक बार पैदा हुआ है तो उसको मरना है। लेकिन कुछ दोनों लोगों के बीच में हुआ और जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने इनको वरदान दिया, और वरदान देने के बाद शायद ये भूल गई कि वो एक ह्यूमन है, और उनका बूढ़ा होना वो हमारी साइकिल में है। इट्स इन आवर साइकिल। Alas, for this grey shadow once a man. So now Tithonus has started lamenting on his condition. Grey shadow is a reference of physical structure, like a ghost. And after that, he's saying that I was once a man. It means that he could die. At that time, he could die before Eos bestowed upon him the boon of immortality. So glorious in his beauty and thy choice, and that is why I become your choice. Okay, so he was very beautiful, and reason of him being beautiful because he was the son of a nymph and a king. So nymph was his mother and king was his father. To his great heart none other than a god. तो अब एक चीज सिंपल सा समझ लो कि अगर आपके प्रेम में कोई देवता पड़ जाए या कोई ईश्वर, आपको मतलब आप इतने खूबसूरत हैं कि आपके प्रेम में कोई देवता पड़ जाता है, तो आप अपने आप को कभी भी देवता से कम नहीं समझेंगे। और अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री अगर ये ग्रीक किंग्स की जानते होंगे तो दे आर रियली वेरी एगोइस्टिक, बहुत एगोइस्टिक, बहुत ही ज़्यादा। ज्यूस वगैरह का अगर आप हरक्यूलिस, ज्यूस, एफ्रोडिट, थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ाई हो जाती थी इन लोगों की। तो टू हिज ग्रेट हार्ट नन अदर देन अ गॉड। अब आपको किसने प्रेम किया है? ईश्वर ने प्रेम किया है। तो अब आप अपने आप को क्या समझोगे? ईश्वर से कम नहीं समझोगे। और यही टिथनस के साथ हुआ। अब जब ये चीज टिथनस के साथ हुई तब क्या हुआ? तो हिज ईगो इन्फ्लेटेड। आई आस्क्ड गिव मी इमोर्टैलिटी। तो सिंपल सा उसने एक बून मांगा कि दैट गिव मी इमोर्टैलिटी, मुझे इमोर्टैलिटी चाहिए।
So I asked thee, give me immortality, then didst thou grant mine asking with a smile, and you just within a flick of a second you have given. आपने तुरंत दे दी विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेस. आप तो देवता थे, आपको तो समझ थी, आपको तो पता होना चाहिए था कि अगर आप किसी को इमोर्टैलिटी दे रहे हैं तो यूथ भी उसके साथ में मिलना चाहिए. बट विद अ स्माइल यू हैव गिवन लाइक वेल्दी मैन. जिस तरीके से एक अमीर इंसान या राजा को ही ले लो कि अगर वो खुश हो जाता था, नहीं पहले के समय पे निकाल के ये लो 100 मुद्राएं ले जाओ, ये लो मेरे गले का हार ले जाओ. तो लाइक अ वेल्दी मैन हु केयर नॉट हाउ दे गिव. तो वो केयर नहीं करते हैं, वो कभी भी इस चीज की केयर नहीं करते हैं कि वो क्या दे रहे हैं. बट दाई स्ट्रॉन्ग आर्स इंडिग्नेंट वर्कड देयर विल्स. तो now when Tithonus grew old, as maturity comes with age, he realized his mistake of asking for eternal life. और इसके बाद समय ने अपना चमत्कार दिखाया. द टाइम हैज शोन द रियल वैल्यू और द रियल सेल्फ टू टिथनस. तो but thy strong arms indignant worked their wills and beat me down and marred and wasted me. So now अब क्या होता है, अब समय अपना चमत्कार दिखाता है. तो ours as a clear reference to time, I could say the mightiest force, and he started aging. It destroyed him, his strength, beauty, everything related to his youth, and drained him physically, emotionally. तो यहां पे लाइन्स एंड बीट मी डाउन एंड मार्ड एंड वेस्टेड मी एंड दो दे कुड नॉट एंड मी. तो मार तो नहीं सकती हैं बट बूढ़ा तो कर सकती हैं. लेकिन कितना बूढ़ा? एक आदमी, एक बूढ़ा इंसान, आपको पता है कितना ज्यादा उसके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो वही सेम प्रॉब्लम्स, और वो ह्यूमन है, तो ह्यूमन की जो प्रॉब्लम्स होंगी वही सेम प्रॉब्लम्स किसके साथ होंगी? वही सेम प्रॉब्लम्स टेथनस के साथ होंगी. तो एंड दो दे कुड नॉट. To dwell in presence of immortal youth, Tithonus lives beside Eos, who is forever young, while he is eternally old. This line is showing his suffering actually. And Ola was in ashes. So his former strength, beauty, and identity are gone, reduced to nothing. Now, the next lines show the ineffectiveness of love and beauty. Lines are, and it is also a rhetorical question asked by Tithonus, which is, can thy love, thy beauty make amends, though even now close over us? So he questions whether Eos' love and beauty can compensate for his endless suffering. Yes, the answer is clearly no, because it's a rhetorical question. And the silver star, thy guide. Now you have heard about it, kids, in your previous class in Sonnet 116 by none other than William Shakespeare. So you have heard about it that this silver star is for the navigators, the one who navigates, and it is always been a metaphor for lovers. And it is associated with Eos, as she is the goddess of dawn. That is why here it is written, thy guide. Shines in those tremulous eyes that fill with tears. Now, Tithonus sees that Eos' eyes are trembling and filled with tears as she listens to his suffering. This shows her sympathy and sadness. Let me go. Take back thy gift. Why should a man desire in any way to vary from the kindly race of men? Now he begs to Eos to take back the gift of immortality. He no longer wants to live forever. And he questions to Eos
He questions to Eos that why any human would want to live different from normal humans who lives and die naturally or pass beyond the goal of ordinance. Ordinance, as I've already written, natural law of life and death. So he is saying that ordinance, which is your natural law of life and death, humans are meant to die. This is their destined end, and where all should pause, all as is most meet for all. It means that death is the proper ending, it's a proper goodbye. We have no right to stop that. We have no right to stop death, as it is the stopping point of our voyage. So, now, a soft air fans the cloud apart. There comes a glimpse of that dark world where I was born. It means that a gentle breeze clears the cloud, revealing the dark earth. Possibly where he was born. Not possibly, but yes, where he was born. Whom? Tithonus. Once more the old mysterious glimmer steals from thy pure brows and from thy shoulders pure. A reference given to Eos as Tithonus daily comes, begs, pleads for his answer, but Eos, as God's work in unexpected ways, didn't answer. So she's mysterious here, and bosom beating with a heart renewed. And bosom beating with a heart renewed. So here comes the light of Eos. Okay, from thy pure brows and from thy shoulders pure. Here comes the light of Eos, radiant and young, with a renewed heart. And from here you will get that might be Tithonus has started envying or become jealous of her this trait. Why? As he is a human and a human can't surrender these six desires: lust, anger, greed, attachment, ego, and jealousy extensively. Thy cheek begins to redden through the gloom. Thy sweet eyes brighten slowly close to mine. Now again, it's again for Eos, that her face, as she is the first ray of the day, turns rosy like the red glow of sunshine, and she is closer to Tithonus, or she is coming closer to Tithonus. Yet they blind the stars and the wild team which love thee. Now, wild team, horses, which love thee, yearning for thy yoke, arise and shake the darkness from their loosened manes and beat the twilight into flakes of fire. Now, because of Eos, soon the stars they shall die, and the sun. Here he is coming from chariot, horses. अपने इंडिया में भी सूर्य देवता के 7 हॉर्सेस होते हैं. उसी तरीके से सेम ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर भी यहां पे आप देख पा रहे होंगे उनके भी हॉर्सेस होते हैं. Okay, so as these horses would advance, the night shall fade away and sky would fill with color, or rather I say fiery colors, which are red, orange, and gold. All 3 colors are for